Hello students. So in the last video we discussed about the parameters used to measure plane angle, solid angle, etc. But today in this video we are going to actually discuss about certain units used to measure distances. Actually we already know various units which are used to measure distance or displacements. The various units are like kilometer, centimeter, foot, meter, etc. These are various units. पर एक्चुअली क्या है, जैसे कि हमें पता है कि अगर क्रिकेट पिच में देखा जाए तो दो विकेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इट इज़ अबाउट 22 यार्ड. पर प्रैक्टिकली क्या है, देखो जैसे कि अगर इस यार्ड, इस यूनिट को अगर हम यूज़ करें टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, देन वी विल फाइंड दैट जो न्यूमेरिक वैल्यू रहता है ये बहुत बड़ा हो जाएगा और साथ ही साथ इसका 10 के पावर में जो आएगा ये नंबर भी हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स में चला जाएगा. दैट्स वाई scientists realize that it is important to use some different units instead of these small units which are used to measure daily life measurements, right? So we will be focusing about these specialized units in this video particularly. So here our heading is units used to measure large distances. And the very first unit we are going to discuss is this is light year. Okay, light year, and the short form is LY. Okay, what is the definition? Actually it is the अगर देखो नाम में दिखा जाए तो यहाँ पे ईयर लगा हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज दैट दिस इज यूनिट ऑफ टाइम. एक्चुअली इट इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस. दो नाम में यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है. एक्चुअली इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. तो डेफिनेशन इसका है इट इज द डिस्टेंस traveled by light in vacuum during a period of 1 year. तो ये डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? इन जनरली द स्पीड ऑफ लाइट इज नोटेड बाय c and the value of c is 3 into 10 to the power 8 meter per second. That means what? एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है? दिस इज 3 into 10 to the power 8 meters in 1 second. Now we have to find out what will be the distance covered in 1 year. So light year, therefore 1 light year, simply we will be using this formula s equals to vt. Distance is equals to velocity into time. Here the velocity is c and time t. So c is equals to how much? This is 3 into 10 to the power 8 meter per second. And instead of t we cannot use here 1 year because यहाँ पे जो c का वैल्यू है इसमें सेकेंड में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 ईयर को भी क्या सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. नाउ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर? दिस इज 365 into 24 hours into in 1 hour 60 minutes, and in 1 minute there is 60 seconds. So this is the total number of seconds in 1 year. तो दिस इज सेकेंड्स. ओके, तो अल्टीमेटली सेकेंड्स विल कट और अल्टीमेटली जो यूनिट रह जाएगा दिस इज इन मीटर. एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दिस नंबर्स विल बी गेटिंग 9.46 into 10 to the power 15 meter. So this is the value of 1 light year in meters. Still if you convert this into kilometers, you will be getting 9.46 into 10 to the power 12 kilometer, right? So this is our first unit which is used to measure large distances. Okay, now we will talk about the second unit. This is astronomical unit.
astronomical unit, and short form is AU. Now how to define it? Actually it is the distance, it is the average distance between the centers of Earth and Moon. Average distance. So suppose this is our Sun and this is Earth, okay? It is the average distance between centers of Earth and centers of Sun. This is Earth, okay? And this average distance is known as 1 AU, okay? And this distance, okay, so write down the definition first. It is the average distance between the centers of Earth and the Sun. अभी यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस क्यों कहा गया? एक्चुअली तुम इसका ये थोड़ा डिटेल में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मान लो ये अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, और अर्थ का ऑर्बिट का एकदम सेंटर में सन का पोजीशन नहीं होता है. दिस इज इंक्लाइंड, दिस इज मतलब किसी भी एक फोसी के ऊपर रहता है. दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस, और इसका पोजीशन सन का पोजीशन किसी एक इस टाइप का जगह पे होता है. जैसे कि अगर सन का पोजीशन यहाँ पे होता तो क्या दिक्कत क्या होता? देखो जैसे कि अर्थ इस तरह रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक जैसे कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज minimum, then we have summer season, right? And when distance is maximum we have winter season. अगर ऐसा होता, इसका पोजीशन सन का पोजीशन एक्जैक्टली सेंटर में होता तो क्या होता? एक ईयर में यहाँ पे एक समर, यहाँ पे और एक समर, यहाँ पे एक विंटर और यहाँ पे और एक विंटर, तो ईयर में हम लोगों को 2 समर 2 विंटर मिल गया होता. तो दैट्स वाई दिस इज नॉट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, रादर इट इज इन सम पोजीशन समवेयर लाइक दिस, ओके. एंड इसका वैल्यू है 1 AU इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर और 1.5 इंटू 10 to the power 11 मीटर अप्रॉक्स, ओके. तो ये है इसका वैल्यू. नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड यूनिट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट from exam point of view also. This is parallactic second. In short, it is known as parsec. दोनों को मिला के हो गया parsec. And it is defined as, it is the distance at which an arc of length 1 AU subtends an angle of 1 second. तो अभी 1 सेकेंड क्या है? एक्चुअली इफ वी डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 divisions, then value of each division is said to be 1 minute. So 1 degree equals to 60 minute, and it is noted by 60. There is 1 prime, okay, and this 1 minute is equals to 60 seconds. There are 2 primes, okay. So what is the relation between 1 second and 1 degree? We can say that this 1 second is equals to how much? 1 divided by 60 into 60, this much of seconds, sorry, this much of degree, right? So this is the relation between degree and second. Okay, now we have to see
मैं इरेज कर लेता हूँ और थोड़ा according to the definition, if the arc length, जैसे कि ये arc, if the arc length is 1 AU, this length is 1 AU, and if the angle is 1 second, then it is the distance at which an arc length of 1 AU subtends an angle of 1 second. Then this length is known as 1 parsec. जैसे कि मान लो पहले बात तो ये है कि दिस आर्क लेंथ इज ए ह्यूज वन, ह्यूज, दैट मीन्स इट इज अबाउट 1.5 into 10 to the power 11 meter, right? So this is a huge one, and if you increase this angle, if you increase this radius length, जितना रेडियस का लेंथ ज़्यादा होगा एंगल इतना छोटा होता रहेगा. तो इसका एंगल इतना छोटा है, मान लो ये छोटा होते होते 1 सेकेंड, जैसे कि 1 डिग्री का 1/16 to 60 टाइम्स, इतना छोटा एंगल है. देन दिस लेंथ इज नोन एज parallactic second. Now how to find its value? For that 1 parsec equals to, पहले तो यहाँ पे रिलेशन हम लोग यूज करते लेते हैं. थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? थीटा इक्वल्स टू सरफेस length divided by radius. No, we already know this relation. Now here we are interested to find the value of r. So r is equals to what? S by theta, right? Simply we will be using this relation, and here this length is 1 AU. चलो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं. Okay, this is 1 AU and here it is 1 second. Okay, तो ऑलरेडी AU का वैल्यू तो हमें पता है, और यहाँ पे क्या है? दिस इज 1 सेकेंड. ऑलरेडी वी ऑल्सो एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन 1 सेकेंड एंड मिनट, बट the unit here to be used here is in radian. You cannot use degree here. So again we know that 180 degree equals to pi radian, right? Or 1 degree equals to pi by 180 radian. तो 1 सेकेंड कितना हो गया? This 1 second equals to pi by 180 into 1/60 into 1/60, this much of radian. So simply we have to put this value also here. तो यहाँ पे है 1.5 into 10 to the power 11 meter, और नीचे क्या है? this 5 by 180 into 1/60 radian. And after calculating all this, we will be getting 3.1 into 10 to the power 16 meter. So this is the value of 1 parsec. Okay, so these are all about the 3 units used to measure large distances. Now we also talk about some other units used to measure distance. Now we'll discuss about certain other units. These are also used to measure distances. Units used for measurements. Units used for measurements. And the very first unit is 1 micron, 1 micrometer, और simply इससे माइक्रोन से भी डिनोट किया जाता है. एंड इट्स वैल्यू इज अबाउट 10 to the power -6 मीटर. शायद सबको ये सब यूनिट्स के बारे में पता ही होगा, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं. ओके, द नेक्स्ट यूनिट इज 1 नैनो मीटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 nm. बोथ आर स्मॉल, एंड इट्स वैल्यू इज अबाउट 10 to the power -9 मीटर. नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तो पता सुना ही होगा, फिजिक्स का एक ब्रांच ही है नैनो फिजिक्स. तो ये सब
इस साइज का जो पार्टिकल्स है ये सब पार्टिकल्स को लेके डील किया जाता है. देन वी हैव 1 angstrom which is noted by A बस, और इसका वैल्यू है 10⁻⁻10 मीटर. दिस यूनिट इज particularly used for measuring atomic radii and nuclear sizes etc. Okay, the very next use we will talk about, it is 1 picometer and it is noted by 1 pm. pm not pm का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, दिस इज पिकोमीटर एंड दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर, राइट. This is also used to measure intermolecular distances. Okay, the next one is 1 Fermi और इसको डिनोट किया जाता है 1 FM. नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है. दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर. सो दीज आर ऑल द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस. नाउ यहाँ पे हम लोग और कुछ 3-4 यूनिट के बारे में देख लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मेगा is equals to how much? This is 10⁻⁶. अगर ये लेंथ का यूनिट है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे दिस इज 10⁻⁶ मीटर. ओके, फिर यहाँ पे आ रहा है 1 गीगा. देखो MB GB TB ये सब आ रहा है, तो 1 गीगा मतलब 10⁻⁹ मीटर. अगर सिंबल यूज किया जाए तो यहाँ पे कैपिटल M, here it is capital G. Next 1 tera which is noted by capital T and this is equals to 10⁻12 meter. These are all about the units. अभी हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर इस वीडियो का फिनिश. तो यहाँ पे एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम दिया हुआ है. क्वेश्चन 1, G equals to 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square kg⁻². तो ये दिया हुआ वैल्यू है and you are asked to fill in the blanks and the units given in this side is equals to cubic centimeter, second -1 and gram -1. Okay, whether it is no, this is as -2. Okay, now how to convert this? यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहली बात यह है कि यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर. मतलब एक तो बात ये है कि दिस इज इन सीजीएस यूनिट एंड दिस इज इन एसआई, बट द प्रॉब्लम इज अबाउट दिस पावर. हियर इट इज cubic and here it is square. Another important point is here there is a unit of a force Newton, but there is no existence of such kind of units. Then how to convert this? For that, first of all, you will be using this side. Here it is given Newton meter square kg⁻². First, we'll split this derived quantity in terms of its fundamental units. We know that force, this is unit of a force, and if we apply this formula F equals to ma, then easily we can say that this is nothing but 1 Newton is nothing but 1 kg meter per second square. So we can write 1 kg meter per second square. Then we have this whole unit is due to this only 1 Newton only. Okay, now we have to write other units as it is. Then kg⁻². Now if we resolve all these parameters, we will say that here it is meter square and 1 meter, that means 1 cubic meter. Then s⁻², then kg⁻1 kg⁻², will be getting kg⁻1. Now it is very simple. Instead of this whole units, we will be using simply this.
तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा देयरफॉर g इक्वल्स टू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 क्यूबिक मीटर s माइनस 2 kg टू द पावर माइनस 1। अभी करेंगे क्या 6.67 10 टू द पावर 11, अभी मीटर को सेंटीमीटर में लेना है तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर पावर में क्यूब। सेकेंड पर स्क्वायर ये सेम ही रहेगा। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स 10 टू द पावर 3 ग्राम पावर में -1। तो 6.67 10 टू द पावर -11, और इसे अगर रिजल्व किया जाए तो हम लोगों को मिल जाएगा 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे पार्ट सेकेंड स्क्वायर सेम रहेगा। दिस 10 टू द पावर -3 और यहाँ पे पावर में -1 है, सॉरी यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1 है, तो विल बी गेटिंग 10 टू द पावर -3 ग्राम -1। So after resolving, here it is 10 to the power -11, here it is 6, here it is -3. So ultimately we will be getting 6.67 10 to the power -8 cubic centimeter per second square ग्राम इनवर्स। So ये हो गया हमारा सोल्यूशन, यहाँ पे मैच कर रहा है ये दोनों साइड, ठीक है। Now we will solve another numeric problem. Express unified atomic mass unit into kg. Question 2. Express unified atomic mass unit into kg. So first of all we know that solution. यहाँ पे हमें पता है कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। यहाँ पे C12 एटम क्यों? क्योंकि देयर आर वेरियस isotopes of carbon, particularly here we will be considering only the C12 atom. Okay, now we have to use Avogadro's number again. 6.023 into 10 to the power 23 atoms of C12 is equals to 12 ग्राम। ओके, तो एक एटम का वेट कितना होगा? देयरफॉर 1 एटम ऑफ C12 इक्वल्स टू हाउ मच? 12 डिवाइडेड बाय 6.023 10 to the power 23 gram. Okay, now simply we have to put this value in this equation. Therefore 1 AMU equals to 1/12 into this, which is equals to this 12 divided by 6.023 into 10 to the power 23, and the unit will be equals to gram. Now after converting, changing the unit, the ultimate value we will get here is 1.66 into 10 to the power -27 kg. So this is equals to m, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो।